हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेल लर्निंग। मैं हूं अभिषेक शाह और यह है आप सबका इंग्लिश क्लासरूम एक्सेल लर्निंग, वेयर वी पोस्ट वीडियोस ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर्स. Today I have come for my class 7 students and I have brought a bombastic and extremely fascinating poem for the students of class 7, and the poem is Tiger. Yes, Tyger. Now the question is why the spelling has been written like this, Tyger. Everything I will explain. Okay, so the poem is a bombastic poem explaining the quality of the tiger besides the quality of the creator of the tiger. Okay, so टाइगर जो है ये एक फियरफुल एनिमल है, एक क्रिएचर है. तो ये जाहिर सी बात है कि जिसने इस भयानक और फियर्स क्रिएचर को बनाया है, जो मेकर है, जो क्रिएटर है, ही must be more powerful than the creature, right? So everything will be explained in the poem. So please take the book in front of you, take a pencil, everything whatever I am going to tell you, you please note it down. It would help you in your examination point of view. So without wasting any more time, let's get into the chapter, The Tiger, written by William Blake. अब और एक जो बात है कि 6 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है ये वाला जो पोएम है. Each stanza consists 4 lines and the explanation is bit complicated. Okay, bit complicated. I don't know how lengthy the video will be, but I will try to finish the poem within 15 minutes. So have patience and watch the video till end, and definitely share with your friends to help them out. And if you want to contact, my phone number has been given in the description box. You can check it out. Okay, so without wasting time, let's get into the chapter. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? So see, from the very beginning, the poet is emphasizing on the point, and that is the tiger, and the spelling is Tyger. ये मैं बाद में explain करूंगा आप लोगों को. So tiger, tiger, burning bright. Here the term burning bright actually represents the bright glowing yellow color of the tiger, the appearance of the tiger. Yeah, the tiger, the color of the tiger is extremely bright and extremely glowing, and the yellow color is like, like burning yellow in the forest of the night. So the tiger is roaming in the forest and it is night time. So it is night, it is complete dark, and the tiger is roaming, but then also the tiger is visible. So you just imagine how glowing the yellow color of the tiger is. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Thy means your. Okay, thy is the old form of saying your. Now it is a rhetorical question. Please note it down. The second couplet of the first stanza is a rhetorical question asked by the poet to the readers, that to the tiger, that what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? That means the appearance of the tiger is very fearful, and the poet is asking that how strong the hands and the eyes are of the creator of the tiger, that he had created this kind of fearful image or fearful tiger. So basically the poet is emphasizing the point that the creator or the maker of the tiger is much more powerful than the tiger. And in the first stanza, tiger, tiger, see, 2 times, actually twice the term tiger has been used, and it is called epizexus. Okay, epizexus, what actually it means, it signals to the reader that the tiger is the central figure throughout the poem. प्लीज टाइगर, टाइगर, पहला जो 2 शब्द है टाइगर, टाइगर, उसे सर्कल करो आप लोग, और वहां पे आप लोग लिख लो EPIZEUXIS. Once again I am repeating, EPIZEUXIS, epizexus. Okay, it is a kind of literary device that has been used to emphasize the point that tiger is the central character, tiger is the core character of this particular poem. Now the second stanza,
In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? Thine eyes means your eyes. That means here the eyes of the tiger have been denoted. Okay, so once again it is a rhetorical question asked by the poet. The poet is asking, in what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? So actually in the second stanza, the first couplet of the second stanza, the poet keeps talking about the eyes of the tiger, and the poet says that when the eyes of the tiger spark, it seems that the eyes are having some kind of raging fire. Okay, मतलब रेजिंग फायर यानी कि टाइगर जो है ये रेजिंग फायर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट कर रहा है टाइगर का जो स्ट्रेंथ है, ओके, और उनका जो गुस्सा है, द रेजिंग फायर. So in what distant deeps or eyes, deeps means here deep oceans or the core of the earth, okay, and skies means heaven or the sun. That means here actually the poet is trying to say that the raging fire that is seen in the eyes of the tiger, the fire is not normal and ordinary kind of fire that is found on the earth. Rather, it is a kind of divine fire that has been brought either from the heaven or sun or from the core of the earth. Okay, on what wings dear he aspires? What the hand dear sees the fire? Now on what wings dear he aspires? So अब ये पोइट जो है, पोइट का ये मानना है कि जो आग दिखाई देता है टाइगर के आँख में, शेर के आँख में, वो एक डिवाइन आग है, वो नॉर्मल कोई आग नहीं है. और वो जो आग है वो आइदर हेवन से लाया गया है या फिर जमीन के अंदर से, फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ वो लाया गया है. तो डेफिनेटली जो क्रिएटर है टाइगर का और जो मेकर है टाइगर का, अब पोइट का क्वेश्चन है कि कौन सा विंग्स है जो मेकर को या फिर क्रिएटर को या फिर लेके गया है हेवन पे या फिर लेके गया है कोर ऑफ द अर्थ पे. वाई? जस्ट टू ब्रिंग द डिवाइन फायर टू पुट इनटू द आईज ऑफ द टाइगर. नेक्स्ट जो है the last line of the second stanza, once again the poet is appreciating the hand of the and the bravery of the creator. Like he is asking what the hand dare seize the fire. और अब जो है पोइट पूछ रहा है कि डेफिनेटली वो जो फायर है वो एक डिवाइन फायर है, तो उसको उस फायर को कंट्रोल में ना लाना मामूली बात नहीं है. राइट? इट इज नॉट वेरी इजी वर्क, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ केक वॉक टू कंट्रोल द टू कीप द फायर अंडर कंट्रोल. सो द पोइट इज आस्किंग दैट जो क्रिएटर है टाइगर का, उनका कितना पावरफुल हैंड होगा जो उन्होंने उस फायर को जो है अपने कंट्रोल में लाया है. सो बेसिकली द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द सेकेंड स्टैंजा आर डिस्क्राइबिंग और appreciating the appearance of the tiger, the raging fire that is seen in the eyes of the tiger. Okay, and the last couplets of the second stanza is describing or appreciating the quality of the creator, that the creator must have a lot of quality and kind of divine quality, otherwise he would not be able to create such a kind of fearful animal. Now third stanza, and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? Sinews means muscle. Okay, so here the poet is appreciating once again the creator of the tiger. He is telling that the creator of the tiger must have strong shoulders. Why? Because it is not easy work to manipulate or to twist the muscle of a tiger. Right? It is not an easy task to manipulate or to twist the muscles of the tiger's heart. This is the reason the creator of the tiger must have a strong shoulder and he must have blessed with art, because tiger, if you when we see a tiger, it's very fascinating, right? It's a very charming sight. It's a very charming sight. So the shape of the tiger
to create the shape of the tiger or to create a tiger, each and every ligament, each and every limbs of the tiger to create, okay, it needs an art. It is a blessings. So in the first couplet of the third stanza, actually the poet is appreciating the creator of the tiger, that the creator of the tiger must have a strong shoulder and he must have been blessed with art, because if it is not so, then he would not be able to create tiger, because one needs more and more power. One needs more and more power to twist the muscle of a tiger's heart. And when thy heart begin to beat, now it's a kind of pride moment. पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि और जब तुम्हारा हार्ट, जो हार्ट बीट जब स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स व्हेन यू केम अलाइव, व्हाट ग्रेट हैंड एंड व्हाट ग्रेट फीट, दैट मीन्स हाउ पावरफुल द क्रिएटर इज, दैट because he could keep you under his control, right? When your heart began beating, when you came alive with your beating heart, and at that time the creator kept you under his control. So the creator must be extremely powerful. The creator's hand and the creator's hand and the creator's feet must have full of strength. Now in the fourth stanza, the poet has compared the creator of the tiger with blacksmith. Okay, why? See, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? So actually in this particular stanza, the poet is comparing the creator of the tiger with a blacksmith in his imagination, and the poet is telling that the creator must have used some divine tools. See, it's not normal kind of tools, right? So that the creator of the tiger must have used some divine tools to create your heavy body. Like some kind of hammer, chain, anvil and furnace, all these things. And the poet is asking, in what furnace was thy brain? That means poet यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारा जो ब्रेन को बनाया गया है, तुम्हारा जो दिमाग को बनाया गया है, वो किस फर्नेस में बनाया गया है. Actually the poet wonders not only with the creativity of the tiger, but also whatever the creator has used to make the tiger. What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp. So once again he also thinks that the tiger's brain must have been made in a furnace with high temperatures, and it must have been terrible moment when the tiger was created. So देखो यहाँ पे जो है पोएट जो है बहुत मतलब he is surprised completely. He wonders that tiger is such a kind of fearful creature. It is not easy to make tiger. It is not easy to create a tiger. So the creator of the tiger must have used some kind of divine things or divine tools. Okay. Now in the fifth stanza, the poet has brought some references, some biblical references from Paradise Lost by John Milton. Okay, see, this particular stanza is telling, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Once again a rhetorical question. Did he who made the lamp make thee? So actually the poet is telling that when the tiger was created by the God, okay, when the tiger was created by the God, at that time all the stars, that means Saturn and his followers, Saturn means Shaitan, okay, so all the stars, those who were engaged themselves in war with him, that means with God, they were very frightened to see the God that he was creating tiger, okay, and they all accepted their defeat already. And then in the second couplet of this fifth stanza, the poet wonders that did
गॉड स्माइल आफ्टर क्रिएटिंग टाइगर। दैट मीन्स यहाँ पे जो है टाइगर को क्रिएट करने के बाद जो स्माइल का जो यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है, ये काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि चलो यार मैंने टाइगर को क्रिएट किया कर दिया। अब देखो जो भी आई मीन स्पेक्टेटर जो भी इस टाइगर को देखेगा, दे ऑल विल बी स्पीचलेस, दे ऑल विल स्पेल बाउंड। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन द पोएट इज आस्किंग दैट आफ्टर क्रिएटिंग tiger, did God smile? And one more thing in this particular stanza which is very important and which is very significant is that the lamb has been mentioned in this particular stanza. Okay, and see the lamb, L is capital, so lamb is completely contrary with the tiger, कंप्लीटली ऑपोजिट है ना। सो यहाँ पे अब पोएट और ज्यादा वंडर हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि क्या ये वही क्रिएटर है जिसने लैम्प को बनाया? इज इट पॉसिबल फॉर द सेम क्रिएटर टू क्रिएट एन एनिमल, टू क्रिएट अ क्रिएचर, अ फियरफुल क्रिएचर, अ डेडली क्रिएचर, अ डेडली एनिमल, टाइगर, हु हैज क्रिएटेड लैम्प? somehow the poet wonders in this fifth stanza. And now the sixth stanza is the repetition of the first stanza. Tiger, tiger, burning bright in the forests of night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry. अब थोड़ा जो है यहाँ पे चेंज है, देखो फर्स्ट स्टैंजा जो है वहां पे था could frame और इस स्टैंजा पे आया है डियर फ्रेम। यही बस डिफरेंस है ये दो स्टैंजा में, लेकिन मीनिंग में भी और थॉट्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूं कि टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ नाइट, दैट मीन्स द टाइगर, वंस अगेन द पोएट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लोइंग bright yellow color of the tiger, and the same tiger is roaming around in the forest in the night time. Okay, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry. अब यहां पे जो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइन हाथ है जिनका साहस था कि तुम्हारे जैसा एक डेडली एनिमल को क्रिएट किया है। डिफरेंस ये है, फर्स्ट स्टैंजा में था कुड फ्रेम, कौन कर सकता था। अब सारा जो अब सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ, फिफ्थ, सारे स्टैंजा में ये एक्सप्लेन किया गया है कि द क्वालिटी ऑफ द टाइगर एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द टाइगर। और यहां पे जाके पोएट जो है हम लोगों के सामने एक क्लियर कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ला दिया है कि जिस किसी ने भी, गॉड ने जो टाइगर को क्रिएट किया है उनका बहुत साहस था। He must be very brave, he must be very courageous, otherwise one would not be possible, one would not be able to make such a kind of deadly creature, tiger. This is the reason first stanza में था could frame your fearful, thy fearful symmetry, अब यहाँ पे है dare frame your fearful symmetry. सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब और एक जो है कि टाइगर, TYGER, YTEGTYGER, परहैप्स टू रेंडर एन एक्सोटिक और एलियन क्वालिटी ऑफ द बीस्ट। एलियन क्वालिटी, मान लो कि टाइगर जो है वो सारे बीस्ट से, सारे एनिमल से थोड़ा अलग है, सो इट हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एलियन क्वालिटी। ओके, दिस इज द रीजन TYGER हैज बीन यूज्ड वंस अगेन। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइगर जो है, it is a symbolic tiger which represents the fierce force in the human soul. That means the tiger is a deadly animal. Okay, different animal है, creature है, जितना सारा creature है सबसे, और टाइगर जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ को। यानी कि हम लोग ऐसे भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टाइगर का जो क्वालिटी है वो ह्यूमन में भी वो क्वालिटी है। दैट मीन्स वी शुड नॉट बी आउट ऑफ द बैटलफील्ड, वी मस्ट बी इन द बैटलफील्ड एंड वी शुड फाइट टू have our own fundamental rights. Okay, so whatever the qualities a tiger possesses, the same kind of strength and quality human souls are also having. बस देर है तो क्या उसे जगाने का।
हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड वी मस्ट बी ब्रेव एज टाइगर, we must have the raging power as or raging fire as the tiger has in his eyes. Okay, so this is the complete explanation. और एक बात है, एकदम फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में जो है बर्निंग ब्राइट, ये एलिटरेशन है पोएटिक डिवाइस। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इस पोएम में। वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 21 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों ने वीडियो को देखा, आई होप सारा कंसेप्ट जो क्लियर है। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग उसे भी चेक कर लो आप लोग, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे बताना। ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।